Yogi Surajnath, Guru Budnath ji, with Gorakh Sabadi, the sayings of Gorakh Nath. Sabadi नंबर 4, सबदी नंबर 4, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में स्पष्टीकरण के साथ, with explanation in both Hindi and English. So सबदी नंबर 4, वेद कतेब न खानी बानी सब ढंकी तली आनी, गगन शिखर मही सबद प्रकाशा tahã būjhai alakha binā. Translation into English by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. No Vedas, no holy book, no speeches, no sermons. They all mask the truth. The word shines high in the firmament. There the vigyani sees the unseen. First explanation in Hindi. पहले हिंदी में स्पष्टीकरण. यह सबदी दो बातों के लिए, 2-3 बातों के लिए अति महत्वपूर्ण है. वह ये कि जो धर्म या अध्यात्म के नाम पर जो किताबें होते हैं वो 2 प्रकार की होती है अमूमन. एक जो किताबें ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर आधिकारिक माने जाते हैं, वेद है, कुरान है, तौरा है, गीता है, ईश्वर के नाम पर बातें या बतियाई, उनमें आप पढ़ सकते हैं, उनमें वहापो कर सकते हैं, अपना बुद्धि विलास कर सकते हैं, मगर उनको नकार नहीं सकते. वो सही है या झूठ है ये नहीं कह सकते. ये एक बात. अब वो सही हो या गलत वो शब्द होते हैं, निर्देश उनका सही हो गलत हो हमें देखने का अधिकार होना चाहिए, मगर वो देते नहीं. दूसरी बात, कुछ किताबें बिल्कुल सही होती है, खुली होती है, या सही इस अर्थ में होती है कि वो आपको उनको शंका करने का, प्रश्न करने का, डाउट करने का अधिकार देते हैं समझ के साथ, जो ज़रूरी है. जैसे बुद्ध है, गोरख सबदी है, जिद्दू है, ऐसे. तो वो किताबें, वो सही निर्देश होते हुए भी वो किताबें होने से, शब्द होने से वो अपने आप में सत्य नहीं होते. शब्द निर्देश होता है, कभी अपने आप में सत्य नहीं होता. तो गलत निर्देश है तो वो गलत ही है, सारा गलत ही है. सही निर्देश की भी अपनी मर्यादा है. सही निर्देश को समझ करके वो जंप लेना, शब्दों के परे जंप लेना, वर्तमानता में आना, ये बात जरूरी होती है. सो ऐसी किताबें वेद है, कुरान है, वेद कतेब यानी वेद, कुरान, उनको तो सीधे नकार दिया है गोरखनाथ, सीधे नकार देते हैं. वो आपको सत्य पर आने ही नहीं देंगे, अपने ही जंजाल में उलझा के रखेंगे. वो हमेशा डर में होते, खतरे में होते मरने के. झूठ को हमेशा खतरा लगता है. झूठ को कभी मतलब वो उसकी पाव इसमें होते हैं ना, हवा में होते हैं, ज़मीन पर नहीं होते, कल्पना में होते. तो हमेशा एक धोखे में रहता है, एक भीति में रहता है, डर में रहता है, डर की छाया में रहता है कि, और अपने आप को सच समझते हुए कि मैं ख़त्म ना हो जाऊं, मैं ख़त्म नहीं होना चाहिए. वो अहम की गति होती है, भले उनके पीछे बहुत बड़े बड़े संत हों. सो वेद कतेब न खानी बानी सब ढंकी तली आनी, यानी कि शब्द वेद को हो, कुरान हो, तो निश्चित नकार देने की बात है. मगर जो हम बोल रहे हैं ये शब्द भी अपने आप में सत्य नहीं होते. शब्द सत्य का निर्देश होता है. तो हर एक की ये जिम्मेदारी होती है कि शब्दों को समझ करके वर्तमानता में आके कुशलता के साथ जिए, भीतर बाहर जीवन गति को जैसा है वैसा जानते रहे, ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता के साथ, अलख संज्ञान के साथ. अलख और विनान विज्ञान, ये अलख और विज्ञान विनान, ये दोनों शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण है. सो हमें योग और योगी की व्याख्या भी इस शब्द में मिलती है. सब ढंग की तली आनी, शब्द सच को ढकता है, निर्देश कर सकता है सही गलत, मगर हम शब्दों में ही उलझे रहेंगे तो शब्द सत्य को ढक देता है. शब्द सत्य की छाया हो सकता है मगर उसी में हम यदि उलझ जाएंगे तो एक सत्य का आवरण बन जाता है, छाया बन जाती है, वही सत्य नहीं होता कभी. शब्द सत्य का सही निर्देश होते हुए भी अपने आप में सत्य नहीं होता. सो खानी बानी भी उसकी अपनी जगह है. दुनियादारी शब्दों के बगैर, विचार के बगैर, जो ज्ञात से ही चलता है, संभव नहीं है. दुनियादारी की रोज़मर्रा की बातें, उसकी अपनी जगह है और उसकी अपनी चैतिसिकता में मर्यादा है. वो चैतिसिकता में मतलब जीवन गति को
जानना है, समझना है तो वर्तमानता में जीना जरूरी होता है। बार बार वर्तमानता में आते हुए, और वो शब्दों में विचार में ताकत नहीं है, सो विचार से जंप और वर्तमानता का जीना, वो भी अलग संज्ञान के साथ। अलख क्या है? अलख यह शब्द अ अधिक लख ऐसे बना है। अ मतलब नकार, नो, नॉट, अन, विदाउट, नकारात्मक रूप से अ का इस्तेमाल है। और लख यह शब्द लखना से है। लखना मतलब देखना। सो लख, लखित, लखा हुआ मतलब देखा हुआ, जाना हुआ, ज्ञात, मेमोरी, रिकॉर्ड, पास, डाटा, जिसकी दुनियादारी में अपनी जगह है। सो अलख मतलब ज्ञात की दुनियादारी में जगह और मर्यादा, उसकी चैतसिकता में मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता के साथ। और ज्ञात से मुक्तता मतलब सारे ज्ञान से मुक्तता। वर्तमानता के लिए ताजगी के साथ, बालापन से, ताजगी के साथ, बालापन, एक चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश, बालापन के साथ, बालिश नहीं, बालापन के साथ, ताजगी के साथ खुला होना। और ये अंतर समझ हमें बार बार इस तरह से खुलेपन के साथ विचार चैन चलती हो तो भी, विचार में मन बार बार भटके तो भी, आते हुए जीने के लिए एक ग्राउंड होता है, मूलभूत ग्राउंड, अजानता का, अज्ञान का नहीं, फ्रेशनेस, ताजगी का, स्टेल, बासापन नहीं, विचार के आधार पर, विचार की मर्यादा में, काल में चलते हुए नहीं, काल के परे वर्तमानता में। और वर्तमानता में किसी इंद्रिया में नहीं होती। इंद्रिया जो घट रहा है उसके प्रति चेतन होने में ही पल पल कालातीतता का, दर्शन का जागना होता है, बोधि प्रज्ञा का जागना होता है। सो अलग संज्ञान। और बिनान मतलब विज्ञान, मतलब विशुद्ध ज्ञान। बुद्ध भी विज्ञान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गोरख भी विज्ञान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का शब्द एक ही है, मूलतः अर्थ उनका एक ही है, चाहे जिस भी निर्देश को लेकर उन्होंने इस्तेमाल किए हो शब्द बुद्ध ने और गोरख ने, मगर उनका जो निहित अर्थ है वो विशुद्ध ज्ञान, या ज्ञान की अपने आप में विशुद्धता। सो विज्ञान, ये बुद्ध विज्ञान, संज्ञा, वेदना इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वेदना, विज्ञान मतलब मन, मैकेनिज्म जो इंद्रियों को महसूस करता है, हाँ कुछ है। सो आम का पेड़ है, आम का पत्ता है, कुछ है, पहली बात विज्ञान, आम का है, संज्ञा, कुछ उसकी पहचान और मेरे लिए अच्छा बुरा है, इसकी वैल्यूएशन, रिकग्निशन एंड इवैल्यूएशन, संज्ञा। और तीसरी वेदना, इसके ऊपर वेदना। चौथा फिर उसके प्रति तृष्णा जागते हैं, या दर्शन, ऑब्जर्वेशन। ये बात, इस अर्थ से बुद्ध विज्ञान यानी कि शुद्ध, अपने आप में विज्ञान शुद्ध है, संज्ञा भरी हुई होती है काल से, तो वो उस तरह से गलत अच्छा बुरा मतलब वो रिकग्निशन, परसेप्शन कर सकती है, उसका इवैल्यूएशन कर सकती है, उसका कॉग्निशन एंड रिकग्निशन, उसको ये है, ये जानना, और ये अच्छा है या बुरा, ये इसकी मूल्यांकन करना, ये संज्ञा का काम है। तो ये विज्ञान विशुद्ध, अपने आप में विशुद्ध होता है। और गोरख नाथ जी गोरख विज्ञान शब्द का उपयोग, इस्तेमाल विशुद्ध ज्ञान इस अर्थ से करते हैं, यानी कि वर्तमानता विशुद्धता है। तो जब विज्ञान, संज्ञा और वेदना के ऊपर हमारे लिए ऑप्शंस होते हैं। वेदना के साथ हम राग द्वेष में जा सकते हैं, तृष्णा में जा सकते हैं, या वेदना के प्रति, भाव भावना के प्रति दर्शन से भी जी सकते हैं बार बार। तो ये दर्शन विशुद्धता होती है, दर्शन भी विज्ञान होता है। विज्ञान मैकेनिज्म की अपनी मर्यादा है, मगर चैतसिक रूप से हम जब विशुद्धता जीते हैं, ऑब्जर्वेशन, दर्शन जीते हैं, तो वो दर्शन तृष्णा नहीं, तृष्णा के परे की बात है, वो मैकेनिज्म नहीं, कोई शब्द तंत्र नहीं है चेतना का। इंद्रिया पल पल सत्य के प्रति चेतन रहने में ही वर्तमानता का जागना है। और वर्तमानता इंद्रियों के परे की बात है, या वर्तमानता में जो बोधि जागती है, शून्यता जागती है, वो इंद्रियों के परे की बात है, नाम रूप के परे की बात है। और वो अपने आप से चित्त का अवधूनन करती है। काल को या भाव पवना वेदना को जो भी दर्शन की अग्नि में आएंगे उनका जलना चलता है, वो विशुद्ध ज्ञान। सो योग अलख विज्ञान है, और योगी ऐसा जो भी कोई जिए वो अलख विज्ञानी है। वो स्त्री, पुरुष, गृहस्थ, सन्यासी कोई भी हो, वो अलख विज्ञानी है। समझ के चलने की बात है। इसमें कोई देव देवता, ईश्वर नाम, कल्पना, व्रत, वैकल्य, अनुष्ठान, पूजा, प्रार्थना, मंत्र, तंत्र, गंध, टीला, होम, हवन, देवी देवता, कुछ भी जंजाल सब साइड
उसका तिरस्कार नहीं, उसका नकार, उसको साइड करने की बात, वर्तमानता में बालापन के साथ चैतसिकता, कॉन्शियसली वही निरंजन का जीना, वही निरंजन जीना, वही अलग संज्ञान मतलब निरंजन का जीना, वर्तमानता से जीना, बालापन से जीना, और उसी में चित्त बोधि के जागरण से चित्त अवधूनन की क्षमता है। इतनी सादी बात है। वेल, नाउ explanation in English. So no Vedas, no books, no Vedas, no holy book, no speeches, no sermons. They all mask the truth. The word shines high in the firmament. There the vigyani sees the unseen. So Gorakh denies Vedas, Quran and all the books in the name of religious living, spiritual living. Well, there are two kinds of books in the name of religion or spirituality, as we see. Some books like Vedas, Puranas and Torah and this Gita and so on are authoritative books in the name of religion or spirituality. That you can intellectualize with these books, but you cannot negate them, what is said in them. You have no right to that. They are in the name of God. So clever or so dull, stupid sayings, maybe by very, very great saints. But so one Siddha, one master says that most of the saints that they, when they come up in the shade of traditions or beliefs, become saints. All right, they are saints, they become saints, but unfortunately they remain more or less neurotic as they come up in the sets. They become saints in shade of some traditions and beliefs. Well, so Gorakh denies all these books. There are two kinds of books, religious books or spiritual books about the learning of life per se. So other books that are the sayings of Gorakh, the Gorakh Sabadis, like this Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakh Nath, Buddha's Deshana Tipitaka, Jiddu J. Krishnamurti's books. So they are free. You can doubt them, you can question them, you can dissect them and see the truth for yourself, whether they are right or wrong. You have right to expose them, and there are clever birds. They can put their traditional things in the name of Gorakh Buddha Jiddu in their books, or compose books in their name of Gorakh Buddha Jiddu, such as Siddhant Padati and so on, false books. So you have right, as Kalamasut in Kalamasutta Buddha explains, you have right to see what is right, even if it is said by Buddha, it comes in the name of Buddha or Gorakh or Jiddu and so on, or whatever. So that books are right. Okay, all that books are no problem. We can doubt them, we can question them, and we can learn about them. But words in themselves, whether they are right indications or wrong, are not things. So wrong books are to be seen and thrown away, and even right books, we have to see them and take jump from those books, from words, and it is our responsibility, it is our understanding, it is our wisdom to come to living the presence, because truth cannot be known from the past. Past has its place, knowledge, past memory has its place in day-to-day life. Without day-to-day life is impossible without past known memory, but it has its limit. Past known thought, time cannot come unto and live in the present. This is so absolute. So denying this books as authority in the name of religion altogether, respecting those books, those we can doubt and dissect, respecting them, but understanding them and taking jump beyond them, keeping them aside and taking jump beyond them, beyond words, and to be coming to living in the present with balapan, with bala, being childlike, innocent. That is not ignorance. Innocence is not ignorance. Ignorance is knowledge, and knowledge is always incomplete from the past known. Knowledge is always in the shade of ignorance because it is incomplete. Innocence has no trace of ignorance. It is just open to learning. Observation is learning, beyond time, basic learning, fundamental learning, mysterious learning, the ultimate mystery. Observation is the ultimate capacity. Observation, moment to moment observation per se, without any ideal, without an ideal that it should remain continuous or it would remain continuous. No. And observation is not in the reach of sense organs. When sense organs, this thought knows its limit, its place in day-to-day life and its limit, so that it backs itself and other senses are awake, open.
So sense organ perceive what is being sensed. This is a leaf, mango leaf, etc., etc. So first mind mechanism, something is there. The second mind mechanism recognizes and evaluates, this is mango leaf and this is sweet mango, good, evaluation, recognition. And thirdly, sensation, so that accordingly that sensation, mango or a good person or my enemy, etc., etc. And that way, then on that sensation feeling, it is natural. And then there is this, you have a choice to, you have an option to go into desire. I like this, that feeling sensations, or I don't like this, craving, aversion, attraction, repulsion. Or psychologically within, out there you do something as needed, but inwardly towards that feeling, sensations, whatever you have felt, observing that feelings, observing that sensations closely and diligently. So either observation, either desire or observation. Vedana pacaya tanha, vedana pacaya panya. With experiencing sensations, you could go into desire or you could go into panya, bodhi, intelligence. As Buddha says, so Gorakh says, pavana hi yoga, pavana hi bhog. Byanda hi yoga, byanda hi bhog. Sensations are yoga. Sensation could be with sensations you could go into bhog. Bindu, you could go into bhog, desire, or into yoga, panya, bodhi. Agani hi yoga, agani hi bhog. With fire, you could go with this fire of consciousness, liveliness, these sensations, feelings, this liveliness, bhava. So feeling, sensation, consciousness is living entity, flowing entity, impermanent, changing, flowing. So with this desiring, reacting, awakening of desire towards it, toward the feeling, sensations that are coming up, so going into becoming, bhava, becoming, and sorrow, ignorance. And instead of that, observing that very feeling, sensations that come up in relationship with a leaf or whatever, observing that feeling, sensation out there, doing something that is needed, but inwardly, psychologically, observing that very feeling, sensations closely and diligently, intelligently. That observation is not desiring, it is not in the reach of sense organs. Sense organs are just open, and the observation is the awakening of bodhi, emptiness, intelligence on its own. It is not that thing, it is the living thing. It is not logy about shunyata or emptiness. It is not ideology shunyavad, it is shunyata. It is not empty logy or philosophy of emptiness. It is living emptiness. So that way, denying Veda Kitab and Veda Kitab, Quran, Torah, all that, and even keeping aside right books of Jiddu sayings, Gorakh Sabadi, Buddha's Tipitaka, etc., and so on. So being open to observation, and then this observation is not within the reach of sense organs, but sense organs are just awake. So that is observation. So it is not in the reach, or in the reach. That argumentation is the end of that. I drive my car with attention. I don't say how I drive car, who drives car with attention, what is it to drive a car by attention. No, that questions are futile. You will face an accident. You are bound to face an accident with such questions. So thought has its limit. Thought has its place, but thought has its limit as well. So presence, with the presence of awareness, consciousness being open and present by knowing the place of thought and its limit. So whether it is in the reach of sense organs or not, that questioning is futile. There is that emptiness, and that in that this organism, this mechanism remains, but contents that come up through mechanism, that is what consciousness is. It is being ended, emptied. Gagana sikhara mahi sabada prakāsyā. That intelligence shines high in the firmament, in the fire of presence. In the fire of presence, it awakens, bodhi awakens. And there the vigyani sees the unseen, The present moment is never seen. It could be seen. We could be seeing, observing, but it is not seen. Memory, past memory is time matter. So presence is living, lively, moving thing. And here are two words, alakha and vigyani. Alakha is made up from a plus lakha. Means no, not, and without, free from, and lakha from lakhana to see. So lakha, lakhita, lakha hua matlab seen, having seen, known, past, memory, data, that is which is put in record in memory. So lakha
means past memory. So without memory, without knowledge, our daily life is impossible. So but it has no potential to come unto and live in the present moment to moment. Thought has no potential to come unto and live in the present moment to moment. So by knowing place of thought in day-to-day life, without which daily life is impossible, so knowing its place as well, respecting it and freedom from it, that is the alakha sense. And so presence of the mind is vigyani, that is vishuddha gyan, pure knowledge. So here is the definition of yoga in Gorakh Nath's words. Yoga is alakha binā, yoga alakha vigyani, yoga alakha binā, yoga alakha binā, yoga alakha vigyani. That is, yoga is choiceless pure awareness, and binā, vishuddha gyan, pure knowledge. So yoga is choiceless pure awareness, and whoever he or she lives so is an alakha vigyani. Yoga is alakha vigyan, yoga alakha vigyan, and yogi alakha vigyani. This is it.